To my YouTube family, कैसे हैं आप सब लोग? So today's video is all about facial at home. जो प्रोडक्ट्स मैं आपको रेकमेंड करूँगी वो है डर्माशाइन की प्रोडक्ट्स है, इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में और इट स्मेल्स सो हेवनली, बहुत मज़ा आया फेशियल करते हुए. So don't forget to subscribe to my channel, hit that notification bell so that you will be notified whenever I'll upload a video, and let's get started. ये फेस वॉश है पोमीग्रेनेट का, बहुत ही अच्छा था. मैंने ऑलरेडी फेस वॉश कर लिया है. सो दिस इज़ द वाइटनिंग क्लेंजर. इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी. अब आप मुझे सारे स्टेप्स देखोगे कि किस किस तरीके से मैंने अप्लाई किया है. अभी तो मैंने स्लो रखा हुआ है, इसके बाद मैं सारे स्टेप्स को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी. You can do cleansing every other day. All these steps will help you improve your blood circulation. फोरहेड आप इस तरीके से करते जाएंगे. सॉफ्ट हैंड से करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है. सॉफ्टली आप जो है अपनी फिंगर टिप्स से कोशिश करोगे कि आप अपनी फिंगर टिप्स की मदद से अपना फेशियल आप करेंगे. कोशिश करें कि आप हर ये चीज़ जो लाइक क्रीम अप्लाई कर रहे हो वो 5 मिनट्स तक करो, लेकिन जब हम मसाजिंग क्रीम अप्लाई करेंगे वो एटलीस्ट हम 15 मिनट्स तक के लिए करेंगे. अब हम नेक को मसाज करेंगे टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड. इट हेल्प्स विद द डबल चिन. अब आप जो है फेशियल स्पंज भी यूज़ कर सकते हो क्लीन करने के लिए. ये डैम्पन फेशियल स्पंज है, इससे आप अपनी स्किन को आराम से क्लीन कर लोगे, या आप वेट टॉवल भी यूज़ कर सकते हो. सर्दियां हैं तो आप हॉट वेट टॉवल यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्क्रबिंग. अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आप बहुत जेंटल स्क्रबिंग करोगे, और अगर आपकी एक्ने पस्ट्यूल फॉर्म में है, बस है उसमें, तो फिर आप जो है अवॉइड करोगे इस स्टेप को. ये बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएटर है, काफ़ी फाइन ग्रैन्यूल्स है इसके अंदर. अब वही स्टेप्स जो है अगेन यहाँ पे रिपीट होंगे, सेम वही स्टेप्स रिपीट होंगे, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया. स्क्रबिंग आप once a week कर सकते हो. इट रियली हेल्प्स इन रिमूविंग योर डेड स्किन. नाउ विल यूज़ द मसाजिंग क्रीम. कोशिश करिए कि मसाज हम एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए करें. स्टेप्स वही अगेन सेम वही है. सबसे अच्छी बात इन प्रोडक्ट्स की ये है कि इनकी स्मेल फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है. सो यू लव इट व्हाइल डूइंग योर फेशियल एट होम.
And yes, one more thing, apply all these things on wet skin. Dry skin पे आप ये apply नहीं करोगे, wet करोगे face को and then apply करोगे. Wet या तो आप simple water से कर लो या फिर आप rose water भी use कर सकते हो if you aren't allergic to it. Let's enjoy the music now. Now we'll use the skin polisher. Again, it smells so divine. Don't worry, just few more steps left. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, let us heal. All these products will help you brighten up your skin complexion. So here comes my neck dance. Yay, we did it. This is the last step. So this is the facial mask. इसका इफेक्ट बहुत कूलिंग था, बहुत रिफ्रेशिंग लगा, और अगर हम समर्स में करेंगे तो फिर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है. Apply it evenly on your face, let it dry, and then wash it off. So as you can see the results, you can apply some toner and your skin is all ready for some makeup. See you guys in my next video. Till then, bye.